ऐसा समझ लो आप कैसे करेंगे. If there are two elements, you can take it like this. ठीक है. ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे. हम्म. Let's say this is A, so this is not A complement. This is B, so this is B complement. Okay, this gives you total, this also gives you total. Okay, so here we get A, B, here we get A complement B, so this gives me total B. This becomes A B complement, and this is what? A complement B complement, right? So this is total A, this is total A complement, that is not A, and this gives me total. Okay, so this is how you can solve it. Fine. Now same question if you want to solve with the help of Venn diagram, then this can be done something like this. Okay. This is A, this is B, here we have total. Let's say that is X. Now this area represents only A. Okay, only इस word का ना बहुत importance है, only word का. ठीक है. This is what? Only B, and this area is A and B. Okay, A and B, this area. Outside we can write neither A nor B. So let's say that is denoted by Y. Fine. Now X is equal to only A. So when I say only A but not B. Okay. Plus this area only B. So that is B but not A. Plus A and B plus neither A nor B. Okay. So either you follow this Venn diagram method or you follow this method. Here, for example, B is what? AB plus not A but only B. This is what? A not B plus neither A nor B. यहाँ आप आओगे तो क्या हो जाएगा? AB plus A not B. This will be not A B plus neither A nor B, right? यहाँ आओगे तो this plus this मतलब x. This what? This is x. इन दोनों का सम इन दोनों का. ठीक है. So that's what. Either you sum up this one, you'll end up with this one. This one is also equal to this one. ठीक है. This plus this is equal to this, or this plus this is equal to this. बराबर है. Same thing you end up. Now let's take an example.
So this is a question. Now this is not that easy question. Okay. So read this question. One night, a certain hotel rented 3/4 of its rooms, including 2/3 of their air-conditioned rooms. If 3/5 of its rooms were air-conditioned, what percent of the rooms that were not rented were air-conditioned? So now there is fraction 3/4, 2/3, and 3/5. So best approach for such questions is, in case of percentage, what do? We assume total as 100, right? So here we can take any number which is multiple of denominator, that is 4, 3, and 5, right? So 4 3s are 12, 12 5s are 60. 60. So now either you assume 60 or you assume 120. That would be easier for your calculation, just for sake of calculation. Fine. So let's assume total number of rooms available are how many? 60. Total rooms are 60, right? Now draw the matrix, 2/2 matrix. So let's, मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूं. अरे ठीक है, हो गया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. फिट है. So now two types of rooms are there: rented and non-rented. This is rented. So this is non-rented, right? Then you have AC. Then you have non-AC. Here you have total. Here also you have total, right? Now total rooms available are 60. So that is equal to 60. I'm writing here 60. Okay. Now it says 3/4 of rooms were rented. So 3/4 of 60, 45. है ना? 45. ठीक है. So अब ये देखो, ये this is rented. Total rented are 45. बराबर है. Now including rooms, including, so 2/3 of its air conditioned rooms. Leave it because we don't know how many are air conditioned. Now come further. If 3/4 of rooms were air conditioned, so 3/4 of 6. 3/5. 3/5. sorry. ये देखते रहना भाई. ठीक है. 12. 36. 36. So 36 rooms are air conditioned. यहाँ लिख दिया मैंने. 36 are total air conditioned, right? Out of these 36, 2/3 are rented, Right. है ना? So 36 का 24. 2/3, 24. So 24 are what? Rented. So rented में ये कितने हो गए? 24 हो गए. So obviously 24 plus 12 is 36, और 36 minus 24 is 12. तो ये नंबर मेरे पास आ गया. Now 45 minus 24, 21 आ जाएगा. 21 आ गया. ठीक है. यहां देखो 60 minus 45, 15. 15. ये हो गया. ठीक है. अब obviously ये 60 है, ये 36 है, तो ये कितना बचेगा? 24. 24. Now total are 24 and rented are 21 non AC. ये 3 हो जाएगा लास्ट जो बचा है.
तो ये हो गया 3, और वैसे भी 15 - 12 इज 3, राइट। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, देखो सारे मैट्रिक्स हमने सारे बॉक्सेस भर दिए, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ इस मेथड में क्या स्पेशल चीज है कि लीस्ट चांस ऑफ मिस्टेक्स, fine. Now there are so many figures which are not required, but still we have filled everything, right? Now what percent of rooms that were not rented were air conditioned? So total non rented are how many? 15. Out of these, how many are air conditioned? 12. 12. So 12 by 15 into 100, how much is this? What is the answer, guys? अरे 3 4 जा 80 3 आएगा, by, 80 80 इतना टाइम क्यों लगता है 80 भाई? 80 80. 80 is the answer. Ajay, is that fair? Yes, sir, I got it. Actually, I'm disconnecting frequently. So I was switching my laptop. So I got it all. You got it? Yeah. Good. Now, can you solve same question with the help of Venn diagram? Vivek, Yes, we can solve. you can solve, right? Anybody who is struggling still to understand the question? Deva, Nice. Sushant, is that fine? Yes, sir, got it. Brilliant. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन में जाओ. Have you tried this question? So let me help you in understanding 3 वाला क्वेश्चन, ठीक है, जगह. लास्ट पेज में मत जाना, वहाँ पे आंसर शीट है. यू रिवील द आंसर कीज, वहाँ पे मत जाओ. सॉरी, मैं कह रहा था आपको कि लास्ट पेज में मत जाओ, वहाँ पे आंसर कीज है. अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये स्पेस चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने ये स्पेस देखा, ठीक है, ऐसा समझो. 3 by 3 के लिए आपको क्या करना है? 3 by 3 के लिए मतलब इफ देयर आर 3 एलिमेंट्स देन मैट्रिक्स मेथड इज नॉट गुड, राइट? सो नीड टू गो थ्रू वेन डायग्राम अप्रोच ओनली, ठीक है. ऐसे सर्कल बना लो, ये 3 सर्कल हो, ओके. Now, this is A, let's say this is B, and this is C. This is total denoted by X. This is none denoted by Y. Okay. This is what A and B. Only A and B is this area. Only A and B. This is what A, B, and C. This is only A and C. A and C. And this is B and C. ठीक है. This is only A, this is only B, and this is only C. So need to understand the difference between this A and this A. This is only A and this is total A, right? So now if I, let's say, denote every area, oh sorry, can I use laser?
A, this is first area. B, only C, this is second AC. This is second BC. This is second AB. And this is all three ABC. So I can say A is equal to first A plus second AB plus second AC and plus third. Similarly, B is equal to only B, only BC plus only AB plus all three. C is equal to only C plus only A and C plus only B and C plus third area. ठीक है? Now, a few things which can be stood. If I add up A, B, C, so what is that? That is sum of all, right? So let's use the notation S for that. Sum. So S is equal to first A, only A plus only B plus only C plus, now AB is here and then AB is also here. So can I say twice of AB, only AB plus twice of BC plus CA, AC, right? And 1 plus 2 plus 3, so thrice of all three. So this I get S is equal to, if I denote this with first area wise define करना ना, first plus twice of second plus thrice of third. ये हो गया total sum. Now, since Y is also there, you can add up Y also here. Okay. Y भी लिख देते हैं. Right. Now, X is equal to what? Total. So X is equal to total A, first area, plus second area, plus third area, right? And plus Y. Now, on the basis of given situation, what we can do, we can subtract S minus X, S minus twice of X, or whatever is the situation. So if I do S minus X, what do I get? ये कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट वाला, यहाँ क्या बचेगा? सेकेंड प्लस ट्वाइस ऑफ थर्ड, ये y भी कैंसिल हो जाएगा. So this what I get, right? Now sometimes you need to maximize second area, sometimes you need to maximize third area, or you need to minimize. ठीक है? So उस basis पे we can assume values, or just plug in the values after here and then you get the answer. बराबर है? So every time you don't need to draw this Venn diagram. If you understand what is X, what is S. S means सबका sum, A, B and C plus Y. That is what S is. If this is not given anything, of course this goes for toss. So this is always 0 then. X क्या है? Actual number. So actual number means first area, second area, third area. So let's say if I take
in any college there are 3 subjects available, A, B and C. Okay, now let's say I'm just taking random numbers. Okay, 60 students choose subject A, 68 70 ले लेता हूँ, इजी होगा कैलकुलेशन. ठीक है, 70 go for B and let's say 75 choose for C. If every student has opted at least one subject, it means Y is 0, right? So you don't need to bother about Y. Now, if 10 students have opted for all 3 subjects, if 10 students have opted for all 3 subjects, find the number of students who have opted for only 2 subjects. Now, the total number of students in the class are 120. कितना बोल दिया? 120 कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या? चलो मान लेते हैं 120. Everything is based on assumption. ठीक है. These numbers are random, तो कहीं अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर मत परेशान होना. So total number of students are 120 in the class. Out of that, 60 opted for only A, not only A, sorry. 60 opted subject A, 70 opted subject B, and 75 opted subject C. If 10 students opted all 3 subjects, then find the number of students who opted exactly 2 subjects. So, अब यहाँ जाओ. 60 plus 70 plus 75 कितना हो गया? 205. 205. S is how much? 205, right? X is how much? 120. सेकेंड एरिया निकालना है, ट्वाइस ऑफ 10. ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा. कितना हुआ आंसर भाई? $65. 65. चलो फ्रैक्शन में नहीं है ना? 65. हाँ. Brilliant. 65. So this is how you can solve it. Now you don't need to subtract here and write all the numbers. Okay, एक लाइन में हो रहा है because you have this understanding. Is that clear? Now in same question, if I say how many maximum number of students opted for all 3, तो इसका I'm मतलब not- सेकंड को मिनिमाइज करना है हमको. मिनिमाइज करोगे. मिनिमम कितना हो सकता है? 0. 0 हो सकता है. So you put this 0, right? And then you get whatever number, 205 minus 120 divide by 2 will give you maximum of third. Fine. और मिनिमम निकालना है तो देख लो. ठीक है. So this is how you can solve it. Okay, now is this clear to everybody? Hello. Yes, Raj. Yes, clear. Brilliant. Then let's say if I talk about total actual number, what will happen? Actual number in terms of S, if I want to write X, how will I write? So A plus B plus C, right? All sum X निकालना है, ध्यान रखना. ठीक है. How can I write X in terms of S? So A plus B plus C minus कितना होगा? Minus the second
हाँ इससे माइनस आगे माइनस, सेकेंड, हाँ राइट, मुझे ये लेके आना, ध्यान रखना, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज गिवन, राइट। सो व्हाट विल आई डू, ए बी सी, ये टोटल कर दिया। अब इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करूंगा, ये तो बच गया, तो सब्सट्रैक्ट करूंगा मैं not twice because twice it is already included, so I'll हाँ, ओनली subtract वंस, x, right, हाँ twice sorry डबल एरिया है ना, सेकेंड एरिया को एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे और इस एरिया कितने बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 2 टाइम्स बार। सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सो आई एंड अप विथ दिस x, ठीक है, मतलब s माइनस सेकेंड माइनस ट्वाइस ऑफ थर्ड विल गिव मी x। ये अप्रोच बहुत जगह बहुत ही हैंडी है। ओनली दिस रिलेशनशिप इफ यू अंडरस्टैंड, you would be able to solve question in fraction of second, 30 seconds, 20 seconds. Otherwise पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा and it will take lot of time, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, क्या किया हमने, ए बी सी तीनों ऐड कर दिया, मतलब टोटल माइनस सेकेंड एरिया माइनस ट्वाइस ऑफ थर्ड एरिया, ठीक है, दिस गिव्स मी x। Okay, now if it is given this y is also given, what will I do, I'll subtract this also, एक बार प्लस है ना तो एक बार माइनस हो जाएगा। बाय को तो ऐड करेंगे ना सीधा। हाँ नहीं 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 ऐड नहीं करेंगे, बराबर उसको रहने देंगे क्योंकि एक बार तो अपने को चाहिए ना, सो वी डोंट नीड टू सब्सट्रैक्ट दैट, ठीक है। तो s माइनस सेकेंड एरिया माइनस ट्वाइस ऑफ थर्ड एरिया विल गिव यू x, बराबर है। नाउ लेट्स गेट इनटू क्वेश्चंस। अभी हम यही सारे यूज करेंगे एंड यू विल फील रियली कंफर्टेबल, डोंट वरी। So try this. Of the 300 subjects who participated in an experiment. So now when you read this question, you understand 300 is what? Is x, right? Yes. Total number, actual number, है ना? X is what? Actual number. Variable change मत करना इधर उधर, नहीं तो फिर confusion हो जाएगा, फिर you will have to draw the Venn diagram every time, right? What I am trying to do is you don't need to draw the diagram every time, ठीक है? So 300 ये हो गया आपका x, so आप यहाँ लिखते हैं, this is x. Participated using virtual reality therapy to reduce their fear of heights. 40% experienced sweaty palms. ये मान लो A है 40%, ठीक है। 30% experienced vomiting, B 30%, and 75% experienced dizziness. So three things are given. This is C. If all of the subjects experienced at least one of these effects, मतलब क्या हो गया अब, y equals to 0, brilliant, and 35% of subjects experience exactly two of these effects. Second area, ठीक है, only two, right? How many of the subjects experienced only one of these subjects? What will you do? तो इसमें हमारा x 300 है, s हमारा हो जाएगा। हाँ अब देखो, सुनो सुनो सुनो, x 300 है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, because everything else is given in percentage, so consider this as 100% is equal to 300, okay, and then you can take these numbers directly, right? So a plus b plus c minus, what will you do? x
हाँ 100 हो गया ना? नहीं माइनस सेकेंड, एक बार सेकेंड ग्रुप को अच्छा ठीक है यहाँ ठीक है, हाँ हाँ, माइनस सेकेंड माइनस हाँ 2/3 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 थर्ड, इज इक्वल because टू see x। s is what, s is first plus twice of second plus thrice of third। हाँ हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x क्या है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। हाँ इट मीन्स हियर व्हाट आई नीड टू सब्सट्रैक्ट, एक सेकेंड एरिया सब्सट्रैक्ट कर दिया और 2 बार थर्ड एरिया सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग, this is equal to x because y is already 0। a plus b plus c, it means how much, 40 plus 30 plus 75 कितना हो भाई, 125 नहीं 145। ठीक है। हाँ माइनस ट्वाइस ऑफ सेकेंड एरिया दैट इज ट्वाइस ऑफ 35, सिंप्लीफाई कर लो इसको। ठीक है, एंड व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, ओनली वन। हम्म So यहाँ पे all three कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, राइट? ये तो लिखा नहीं है। हम्म हाँ तो ऑल 3 निकाल सकते हो ना, दिस टोटल इज, बाबा देखो, मतलब all three पहले निकालना होगा, उसके बाद हम हाँ दिस इज नॉट ट्वाइस, दिस नॉट ट्वाइस, दिस 35 और माइनस ट्वाइस ऑफ all three All three. all 3। okay, this equal to how much, 100 100। 100 yes नहीं 300 नहीं लिखो, राइट 100 because we are dealing 100। in percentage, no। हाँ, ठीक मैं है, एक्चुअली वैल्यूज निकाल दिया था, तो आई हाँ नहीं फिर मिस्टेक हो जाएगा ना। so get all 3, all 3 is equal to how much percentage, सॉल्व करना पड़ेगा। 5%। ठीक है 5 आ गया। अब 5 into 3 मतलब कितना हो गया, 15 हो गया all 3, right। now you can put the values and calculate it। राइट। ठीक है, तो x is equal to you know first plus second plus third, right। now you know this is 35%, this is कितना लेके आया, 5% लेके आया, and this total is equal to 100%। ये आ जाएगा फर्स्ट एरिया कितना परसेंट हुआ, 60 ठीक है, हाँ 60, तो 60% ऑफ हाउ मच, 300, 300 कितना हो गया, 6 3 जा 180 180, so 180 is your answer। राइट। is that fine with everybody, Deva, Sushant, Yes, sir. Harsh, you are there, नहीं, सर हाँ जो मतलब जो हमने ये जो है 35 - 2 into all of 3, मतलब लास्ट के 2 3 स्टेप्स नहीं समझ आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हाँ अभी सुनो, ये आपको समझ में आया, यस गॉट इट। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मैंने ए बी सी में डाल दिया, ये डिजीनेस और वॉमिटिंग जो भी नाम है, ठीक है। सो a प्लस बी प्लस सी माइनस सेकेंड माइनस ट्वाइस ऑफ थर्ड, ट्वाइस ऑफ थर्ड माइनस क्यों किया, क्योंकि एस में क्या है, जब आप सम अप करते हो तो ये कितने टाइम आ जाता है, 3 टाइम्स आता है, ये 2 टाइम्स आता है। मुझे एक्स लेके आना है, एक्स क्या होता है, ओनली वन एरिया प्लस प्लस ओनली सेकेंड एरिया प्लस ओनली थर्ड एरिया, तो ये 2 टाइम्स है, तो एक बार ये सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। Right. तो एक बार मैंने ये सब्सट्रैक्ट किया और इसको 2 बार सब्सट्रैक्ट कर दिया। नाउ आई गेट एक्स, x is what, total, since we are dealing in percentage so I assume that total is how much, 100। राइट। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। अब देखो ये दिया हुआ है
ए बी सी कितना है 40 + 30 + 75, सी 75, राइट? ये देखो, देन if all of the subjects experience at least one of these effects, it means y is 0, so tension khatam. Then 35 of the subjects experience exactly 2 of, got it. 35% ऑफ, राइट? सो 35%, ये 35 सीधा लिख दिया क्योंकि सेकंड में मुझे कितने बार सब्सट्रैक्ट करना है? एक ही बार, तो 35 सीधा लिख दिया, ठीक है? Exactly. How many of the subjects experience only one of these? Now third नहीं पता है मुझे, so what I do, twice of all three is equal to 100. Now when you solve this equation, you get the value of all three, and that is equal to how much we got? 5, right? यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes. So all three is equal to 5. Now you know x is equal to first plus second plus third. Second is given 35, right? Yes. ये 35, थर्ड अभी आपने निकाला 5, तो आप फर्स्ट निकाल लोगे, कितना होगा? कितना होगा? 35 + 5 40, राइट? 100 - 40 is 60. So first is equal to 60. Now this is what? This is 60% basically, Okay, है ना? out of 3. हाँ, तो टोटल क्या है? 300 है, 300 का 60%. So how much is that? 180. 180. That's your answer. Got it. Thank you. Cool. Is this clear to everybody? देवा बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं. हाँ सर. आ गया समझ में? हाँ. गुड, फिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. थर्ड वन. Same way, guys. In a class of 50 students, now here it's not dealing in percentage. So this is your X. 20 play hockey, 15 play cricket, and 11 play football. तो आप क्या करोगे? 20 + 15 + 11. Okay. 7 play both hockey and cricket. 4 play cricket and football. 5 play hockey and football. If 18 students do not play any of these given sports, how many students play exactly 2 of these sports? So minus second area, right? Second area में क्या क्या आएगा? 7 4 5 4 5. ध्यान देना माइनस साइन है, ठीक है? माइनस ट्वाइस ऑफ थर्ड एरिया. थर्ड एरिया नहीं दिया. थर्ड एरिया नहीं दिया, विल राइट थर्ड एरिया, ठीक है? इफ 18 स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी ऑफ दिस स्पोर्ट्स, अब यहां क्या करोगे? प्लस 18 18 + 18, ठीक है? नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? This is equal to 50. total exact number, right? So that is X. 50. भाई ये यहाँ पे ना राज, हम्म. ये एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3 नहीं दिया हुआ. ये मतलब इसके अंदर ये इसीलिए exactly 2 exactly 3 नहीं दिया हुआ, ये दिया अलग अलग से दिया ना. हाँ. So ये ऐसा हो गया, देखो A B, ठीक है, B C and C A, इस तरह का दिया हुआ. नहीं, इसके अंदर भी ये थर्ड वाला भी इंक्लूडेड है. मैं ये कह रहा हूँ, ये सेकंड ए भी नहीं है इसके अंदर. जो ऑल 3 है ना, वो वाला भी इंक्लूडेड है. जैसे अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो 7 के अंदर ये जो एक 7 प्ले, हाँ, ये जो हमने क्योंकि एग्जांपल दिया है ये पे एग्जैक्टली थर्ड एरिया भी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो वी
So what happens then in that case? Yeah, guys, this is really important to observe, है ना? Because here it is not using the word only. It means third area is included. Yes. So when we draw this diagram, ऐसे क्या हो रहा है? This is given, okay? Then this is given. Then this is given. It means this is included how many times here? 3 times. 3 3 times. times. समझ रहे हो? तो अगर मैंने ये सब्सट्रैक्ट किया इसका मतलब ये 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट हुआ है. सो व्हाट विल आई हैव टू डू? तीनों बार सब्सट्रैक्ट हो गया तो पूरा साफ हो गया ना. तो आई हैव टू ऐड वन टाइम all 3 plus 18. This is the equation. So 20 plus 15 plus 11 minus 7 plus 4 plus 5 plus all 3 plus 18 is equal to 50. Now you get all 3. How many students play exactly 2 of these sports? How much is all 3? 2. Everybody got 2? Yes, 2. हाँ, अब ये देखो, ये 2 is included in 7, in 4, in 5 as well, right? So 7 minus 2 is how much? 5. 4 minus 2 is 2. 5 minus 2 is 3. अब ये आप 10. ऐड कर दो. तो 10 हो गया. You got the answer. ये लोग डायरेक्ट नहीं था. Here we have to observe as well. हाँ, so need to be careful with only word. ठीक है, overlapping sets में only is really important. Oversight में you can make the mistake and then गलत हो सकता है. So now is this clear? See, you could solve in one line, isn't it? Once you understand the basic concept. So is that clear? Hello. Yes. Sushant? Yes, sir. Yes, clear. Clear, right? ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है भाई? सर Somebody- हिमांशु. हिमांशु. हाँ. वो सिस्टम चेंज हुआ ना तो नाम चेंज करना भूल गया मैं, जल्दी जल्दी में लॉगिन हो गया. कोई बात नहीं, समझ में आया ना? जी सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. फोर्थ वन.
You understood the question? Of 3 persons, 2 take relish, 2 take pepper, and 2 take salt. The one who takes no salt takes no pepper, and the one who takes no pepper takes no relish. Which of the following statements must be true? Now be careful. It says must be true. First statement says the person who takes no salt also takes no relish. It's just a puzzle. So draw the matrix and then arrange it. एक तरफ you can write people और एक तरफ you can write, see, person 1, person 2, person 3. अरे यार तो ऐसे relish, salt, pepper. So क्या बोल रहा है? One who takes no salt takes no pepper, and the one who takes no pepper takes no relish. तो इसमें तीनों ही नो नो हो जाएगा एक पर्सन के लिए, किसी भी एक पर्सन के लिए. No, no, no. ठीक है. Now if he takes this one, he will take this one also, he will take this one also, right? Same way ये. अब देखो कितने कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना. सेम स्टोरी. The person who takes no salt also takes no relish. Person who takes no salt, no relish. Yes. Any of the 3 persons who take pepper also takes relish and salt. Yes. The person who takes no relish is not one of those who take salt. Of course. Looks all 3. Hmm. I not understood once again. So read the question again. This time. क्या बोल रहा है? Of 3 persons, 2 take relish, 2 take pepper, and 2 take salt. Okay. तो यहां मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया? 2, 2, 2. Okay. Then the one who takes no salt takes no pepper. No salt, no pepper. Now, and one who takes no pepper takes no relish. So no relish. तीनों में नो आ गया. So rest क्या बचा मेरे पास? Yes, 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 because I need to put 2. Yes, right? एक नो हो गया तो 2 ऐसे हो जाएगा. 2 2 है. And then you go through statements and see. Verify करो. Verify हो रहा है क्या? The person who takes no salt also takes no relish. Person who takes no salt, no relish as well.
So this is true. Second में आ जाओ, any of three persons who takes paper also takes relish and salt. जिसने भी पेपर लिया है, relish भी लिया, salt भी लिया, relish भी लिया, salt भी लिया. Right? So this is also true. Third one, the person who takes no relish. No relish is not one of those who takes salt. Of course, he has not taken salt. Done. Ambika? Still not clear. एक सेकंड भाई. How many people are there? 3 people are there. Okay. So I'll make the matrix. ठीक है. And 3 things are also there. बराबर है. Done. यहां तक समझ में आ गया? Yes. P1, P2, P3. 3 people are there. Now 3 things are there. क्या क्या है? देखो. Relish, pepper, salt. Salt. Pepper, salt. Salt. ठीक है. It says of the 3 persons to take relish. Relish कितने ले रहे हैं? 2. Two. To take pepper. 2. Salt again 2. 2. Fine. Now Yes. read further. It says that one who takes no salt. Okay. No salt. No salt. Person who takes no salt takes no pepper. No pepper. Fine. Yes. And one who takes no pepper, he has not taken pepper, so he will not take relish as well. This is the information given. Now, if this person has not taken any of, these 2 are who have taken all 3, right? Because here you need to come up with 2 as well. Yes. This is yes, 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 all 3. हो गया मैट्रिक्स पूरा? Yes. अब आ जाओ आप स्टेटमेंट वेरीफाई करो. The person who takes no salt also takes no relish. Person who takes no salt कौन है? P1. So he has not taken relish as well. So this is true. Come to second. Any of 3 persons who take pepper also takes relish and salt. Pepper किसने लिया है? Yes. P2 और P3 में. तो relish और salt भी लिया है. Right? So this is also Yes. true. Now come to third statement. The person who takes no relish is not one of those who take salt. No relish, so he has not taken salt. So this is also true. Is this Sir, clear one now? question. Yes, yes, clear. One question. The second part, one who takes no paper takes no release. Can we apply in P2 instead of P1? P2 For second no. one, only for second one. Come to this one. No, this part only. The one who takes no paper takes no release because we applied in P1 all the n. Can we the second stem? Can we apply in P2? No, you cannot. NN. How will you apply that? Then it won't total won't come out to be 2 na then in that case.
only P3 will be there. So the count for the final, the last You need to value, take care of this people. yes, the last value should be 2. Okay. So if P1 is n for paper and P2 is also n for paper, that means that P3 will be will take 2. That is not possible, na? According to the question, we need we need 2 persons. ठीक है, this is the first information given, no? Okay, okay. Hmm. Yes. Cool. Guys, so far we have done only 4 questions. मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? इतना स्लो कैसे? चलो 5th में आ जाओ. In class of 33, that means X is what? 33. 20 play cricket, 25 play football, and 18 play hockey. 15 play both cricket and football. 12 play football and hockey, 10 play cricket and hockey. If each student plays at least one game, how many students play only cricket? Guys, here. This is similar to the one we did earlier. Exactly. So what will you do? आप करोगे a plus b plus c minus सेकेंड एरिया. 20, हाँ, सेकंड के ऐड करके उनको माइनस करेंगे, मतलब हाँ. सारे, प्लस और फिर थर्ड एक एरिया बार को, ऐड करोगे थर्ड, हाँ, is equal to total 33. So you will get third. How many people play? Exactly 3 games. And then you will put that value in first plus second plus third, मतलब x की value में, and you'll get it. Is that clear? You got the approach? Himanshu, Deva, Vivek. यस यस, यहाँ पे भी एग्जैक्टली 2 नहीं है, राइट? सो हाँ, +3 करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ -2 times 3. solve it. Okay. टू आ रहा है आंसर. आंसर 2 ऑप्शन में है ना? हाँ, सही आ रहा है फिर. D is the answer. Done, guys? So 20 plus 25 plus 18. Okay. Minus 15 minus 12 minus 10 plus all 3 is equal to 33. Done? Himanshu, what is the answer? .
So 2. Yes. 2 is the answer. Cool, guys. Chalo, come to next question. Question number 6. Of the 150 houses in a certain development, 60% have air conditioning. So you will assume total number of houses are 100. Okay, because we are dealing in percentage. And that 100 is equal to 150. Last में करोगे, ठीक है, percentage निकालने के बाद, है ना? So 60% have air conditioning, 50% have sun porch, and 30% have swimming pool. So 60 plus 50 plus 30. If 5 of the houses have all 3 of the amenities and 5 have none of them, how many of the houses have exactly 2 of these amenities? Who got the answer? क्या करोगे भाई? देखो, here we will do 100 is equal to how much? 60 plus 50 plus 30. Okay, and अब इसमें कितना हो गया? When you sum up, this is S basically, right? So S has first area plus twice of second area. इसका मतलब इसमें twice of second area आया, तो आप क्या करोगे? माइनस सेकेंड एरिया, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया. अब थर्ड एरिया कितने बार ऐड है? 3 बार. आपको कितने बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? 2 बार, राइट? फिर 5 of the houses have all 3. So basically now you better convert this into percentage, I think, because 5 of the houses have all 3 of the amenities and 5 have none of. So all 3 is given, and then you have none. This is equal to 100. So 150 का ना परसेंटेज ही निकाल लो, झंझटी खत्म हो जाने दो. 150 is equal to 60% of 150 plus 50% of 150. बात समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? जो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन परेशान करेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट कर दिया. माइनस ट्वाइस ऑफ 5 5. प्लस
none, that is 5. इसको solve कर लो guys, you'll get second area. How many of exactly 2 of these amenities? This is better writing directly in terms of percentage, because here this number is given as actual number, okay, and this is also given as actual number. वो आपने लिखा है जो लास्ट में सेकंड से पहले, वो 30% ऑफ 150 है। हमने 30% 150 30% हाँ ऑफ 30%, 30 नहीं 30% ऑफ 150 ऑफ कोर्स, 150 ठीक है, 55. आ गया, गुड. अच्छा So is आंसर this ये clear to everybody? क्या बोला जाए? नहीं कुछ नहीं. This is your solution, okay. इसको मत यूज करो क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा. Everybody got the answer? यस सर। चलो 7th में आ जाओ. 7 तो हमने पहले भी किया था जब हम परसेंटेज के बारे में लर्न कर रहे थे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, राइट. फिट है, तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो. Otherwise you can make it 2 by 2 matrix and you can solve it. If somebody has not solved this question, can try this question. 8-1 is also similar. So yeah, this is I'm doing 7th one, ठीक है. So exceed किया, not exceeded, okay, and ticket given, not ticket given, fine. Exceeded कितना है? 10% of the motorist, ठीक है, let's say 10, है ना. Then exit, total exit करने वाले कितने हैं? Let's say that is x. So this goes 20% of the motorists who exceed. 20% मतलब कितना हो गया? 0.2x. Okay, so this is how we get this number, and this total is equal to 100. ठीक है, सॉल्व कर लो. हम्म 10 जो है बेसिकली 0.8x हो गया ना। हाँ 10 जो है 0.8x हो गया, तो x इज इक्वल टू हमारा जो मतलब जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 12.5 आ जाएगा, मतलब 1/8। हाँ 12.5%. ठीक है guys, how do you get x minus 0.2x is equal to 10? अभी कितना हो? 0.8x is equal to 10, so you get x. बराबर है, x equal to 10 by 0.8. 1/8 में कितना होता है? 12.5%. That's what you get.
डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20 by 0.4 which comes out to be C 50%। 50%। पॉइंट टू बाय 0.4 होगा। 40% इज टू 20, है ना? करेक्ट। हाँ चलो these are easy questions ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। Yes guys, what is the answer?
Is this so much difficult? Guys, let's draw the Venn diagram. Okay. Now, of the 84, this is X, who attended meeting in a school. 35 volunteered to supervise children during the school picnic, and 11 volunteered both to supervise children during the picnic and to bring refreshment to the picnic. If the number of parents who volunteered to bring refreshment 36 आंसर आ रहा है 36 36 आंसर आ रहा है नहीं आंसर तो 25 आ रहा है शायद आप देखो सुपरवाइज करने वाले कितने हैं दिस सुपरवाइज एंड दिस इज refreshment. Okay, two categories are there. 35 volunteered to supervise. So this is how much? 35. Okay, total is how much? ये भी ऐसे लिख देता हूँ 84 is X total. Cool. Now refreshment is not given. And 11 volunteered both supervise children during the picnic and bring refreshment to the picnic, right? So this is what 11. Clear? This we don't know. Let's say who went for only refreshment, that is X. Clear? Now, if the number of parents who volunteered to bring refreshment was 1.5 times, refreshment was 1.5 times the number of parents who neither volunteered to supervise children during the picnic nor volunteer to bring refreshment. How many of parents volunteered to bring refreshment? So total refreshment is how much? X plus 14, X plus 11, X plus 11. And this is equal to how much? 1.5 times of this one. So let me get neither, right? So for that, I need to have total. 84, देखो. 84 minus, this is how much? 35 minus 11 is 24, right? So minus 24 plus 11 plus X. बात समझ में आ रही? टोटल 84 में से क्या कर दिया मैंने? What did I subtract? This complete area. So what will I get? Neither. मतलब ये Y. Okay. So 84 minus this total is equal to Y. This is Y. बराबर है? Now X plus 11. Why X plus 11? If the parents who volunteer to bring refreshment was X plus 11 is refreshment. 1.5 times of
Of what? 84 माइनस कितना भाई? 24 प्लस 11 प्लस x okay. Now solve it and get the value of x. Anybody who could not understand? Sushant? Understood, sir. Good. इसको भी तो टेबल से कर सकते थे ना? हाँ, टेबल से भी कर हाँ, सकते हैं, मैट्रिक्स से। टेबल से बता सकते हो। जितने भी 2 एलिमेंट्स के होंगे ना वो दोनों से हो जाएंगे, वेन डायग्राम से भी हो जाएंगे, टेबल से भी हो जाएंगे। क्योंकि टेबल से इतना मतलब समझने की जरूरत नहीं पड़ा, 36 ही आ रहा है आंसर। तो कहीं मिस्टेक कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग में। वाई वाई मतलब क्या है? नीदर ए नॉर बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर इसका 36 नहीं है? नहीं 36 नहीं, मेरे ख्याल से कितना आ रहा है? सिंपलीफाई करके देखो, 25 आ रहा है मुझे लग रहा है आंसर। नहीं नहीं नहीं, 25 इज x, सॉरी 25 यू आर गेटिंग x, टोटल आंसर इज 36। हाँ, बिकॉज x तो प्लस 11 करोगे तो x मैंने प्लस वही 11 है बोला तो। था राज। हाँ तो मुझे लगा कि x सॉल्व कर रहे हो, वो आ रहा है बराबर है। क्योंकि आपका टेबल से आंसर तो सही है। इतना बड़ा इक्वेशन बन भी नहीं रहा ना। हाँ, 36 ही बोला था मैंने। 36 सही है, 36 सही है। फाइनली यहाँ भी आपको 36 आएगा ना, बिकॉज x इज दिस वन ओनली रिफ्रेशमेंट एंड वी नीड टू कैलकुलेट टोटल रिफ्रेशमेंट। मैट्रिक्स से सॉल्व करना ज्यादा इजी है ये। ठीक है, मैट्रिक्स ही कर लो, तो मैट्रिक्स में कोई फाइट नहीं है। है ना, फिट है। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
What is the answer? Somebody gave your answer. Antka A15, yes. Ambika, correct. So marketing firm determined that of 200 households surveyed, 80 used neither brand A nor brand B soap. 60 used only brand A soap. And for every household that used both brands of soap, 3 used only brand B soap. How many of the 200 households surveyed used both brands of soaps? मैट्रिक्स बन लो, सीधा सीधा हो जाएगा. एक तरफ ब्रांड ए, दूसरी तरफ ब्रांड बी. ठीक है. A, B, not A, not B. टोटल हो गया. टोटल इज हाउ मच? 200. Put these values. Neither brand A nor brand B is this one. How many? 80. Okay. 60 used only brand A soap. Only brand A soap. ठीक है. कितना हो गया? 140. तो कितना बच गया? 60. ठीक है. अब आप देख लो भाई, इसके बाद क्या बोल रहा है. And for every household that used both soaps, 3 used only brand B. ठीक है. So 1:3 में डिवाइड हो गया वो. ये और ये कितने में? 1:3 में. ठीक है. X is equal to 15 हो जाएगा. This is your question answer. Sorry. फिट है. So guys, shall we stop here? One sir, 3 जो था यहाँ पे लिखा है 3 used only brand B soap. Out of लिखा है. For every अरे household रेशियो that है use बाबा. both. Okay. And for every household that used brands of soap, both brands of soap, 3 used, मतलब A, B and only B. क्या रेशियो है? 1:3. If one person is अच्छा. using A, B, Okay, then okay. 3 persons are using only B. तो Got इसका it. मतलब हो गया 4x is equal to 60 और x is equal to 15. ठीक है. तो 60 को आप 1:3 में डिवाइड कर दोगे तो 1555 हो जाएगा. डन. फिट है. So guys, can I expect that rest of the question you would be able to solve? Nothing new concept is there. Whatever we discussed so far, same concepts are used. Okay. How many questions are there? 25 questions are there. I think last 4-5 questions are on DS. ठीक है. फिट है. ओके. चलो देन. बाय बाय. Bye.